अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आसिम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम है आबदा and I have been attached with the education industry for more than 20 years, and I have been into freelancing and other things as well. And today I'm here on this CxO platform where we have so many people who are connected with different fields in corporate sector and other sectors like business and others. And we are here today to interview Asim Ajmal. Welcome, Asim. And we are going to talk about Asim's journey, but he has learned through his experiences how he has been doing things, and he has a startup as well. He has a company, Tekrowe, and we are going to talk about his company, his learning, and we are going to learn things from him that are going to help us as professionals as well. So, Asim, again, uh, pehla question that I'm going to ask you about is about your journey. How did you start? कैसे आपने स्टार्ट किया? आपको क्या क्या आपके ऐसे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको हेल्प किया इन लर्निंग थिंग्स एंड बीइंग अ सक्सेसफुल पर्सन? सो ओवर टू यू. Thank you so much, Abdar. Glad to have a meeting with you, and thank you so much, CxO Global, to provide this platform to talk about myself and my journey and my experience, and of course, Tekro. सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था, और मतलब आई हैव सीन द progressive environment in my family. Like my grandparents migrated from Eastern Punjab after 1947, or in fact everyone started from zero. तो बेसिकली इसी किस्म की मैंने प्रोग्रेस और डेवलप अपने अपने बचपन में देखी, तो और सब कुछ। तो आई born in Rawalpindi, and मेरी जो initial education थी वो सऊदी अरेबिया में थी, because my father was working there for some years. और then my primary education was in Islamabad, मैट्रिक भी इस्लामाबाद से किया, और FSC भी इस्लामाबाद से की. Then I took admission in BSc Honors of Computer Science in International Islamic Chemistry back in 1996. ये वो टाइम था जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं थे. तो Islamic University started, was the first one actually who started in Islamabad this BSc Honors program. So I was fortunate that I got admission there. तो डिफरेंट 2000 में अपनी अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, मास्टर्स किया सेम यूनिवर्सिटी से. और मेरी जो पहली जॉब थी दैट वाज इन विजुअल सॉफ्ट. आई स्टार्टेड माय करियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय जॉब व्हेन आई मेट द सीईओ ऑफ दैट कंपनी, तो आई थिंक दैट वाज द मोमेंट एंड आई डिसाइडेड कि मुझे भी किसी ना किसी स्टेज पे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है. तो लाइक आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट विद इन द फर्स्ट आवर, जो एक जो आपका पहला दिन होता है, आप ऑफिस में आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, और अपने बॉस से मिलते हैं, अपने सीईओ से मिलते हैं. तो that was an inspiring moment for me. So then worked there for some years, and ये वो टाइम था जब बहुत सारी e-commerce applications बन रही थी back in 2000, and so मैंने भी basically से web enterprise applications पे ही काम किया as a software developer. Then I moved to LMKR, और LMKR में भी I started my career as a software developer. Then some career progression happened, and I promoted as team lead, then project manager, then product manager. So this is how I evolved in LMKR. I've worked there for 14 years, and then in 2015 I joined Teradata. So it was a total different environment, completely services and consulting world. So but that was a very good, wonderful experience. और Teradata में तकरीबन कोई around 6 years काम करने के बाद I got an opportunity to work in IBM. So IBM was again much bigger company than Teradata. वहाँ पे भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. और लास्ट ईयर in 2022, in the month of May, I decided कि मैं basically Tekrowe को as a full time किसी रोल के अंदर ज्वाइन करूँ. तो जो टेक्रो थी, उसका अगर मैं आपको जर्नी बताऊं, तो इट स्टार्टेड इन 2017 एज अ सोशल वेंचर.
and one of my co-founder was in US, और वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके एक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा था. तो आई हेल्प हिम, और एक पर्सनल कैपेसिटी में. और देन फिर व्हेन कोविड केम इन, तो कोविड के आने पे वो जो हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म था वो फर्दर इवॉल्व हुआ, कुछ कमर्शियल लेवल पे गया. इट वाज डिप्लॉयड इन लीबिया ऑफिशियली. और ओके। उस टाइम पे भी मतलब जब हमने उसको उसको बनाया था, हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया. और व्हेन वी हैड, क्योंकि क्योंकि मेरी अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, जो अदर मेरे को फाउंडर्स थे उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, एवरीवन वाज बिजी इन देयर प्रोफेशंस. तो एक एथिकली भी ठीक नहीं था कि हम लोग किसी उस पे काम करते, किसी और चीज को ज्वाइन करते. तो देन हमने किसी के और के साथ, थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके वो एप्लीकेशन डेवलप करवाई. और जब वो डेवलप होगी तो देन फिर वी रियलाइज कि यार ये चीज तो हम खुद भी कर सकते हैं. इट इज नॉट समथिंग. और बेसिकली मेरे जो जो अदर को फाउंडर्स हैं टेक्नो के, हमारा हम लोग बेसिकली वी आर कजन्स एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम चाइल्डहुड. तो वी डिसाइडेड कि क्यों ना हम खुद कोई वेंचर करें, बजाय इसके कि हम कोई चीज किसी से बनवा के उसको आगे करें. तो व्हाई नॉट. So then in 2020 we formed this company. So, but I was in the remain in the advisory mode for some time. And in 2020, May 2022, I finally decided that I should join Tekrowe as a full time and leave the corporate world. A difficult decision था, but I had to take it. And because अब नहीं तो फिर कभी नहीं ये situation थी तो. But Yeah. Alhamdulillah, it is going well. So So this this is seems, brief my thing. yeah, Yeah. this seems like a really exciting journey, Asim. And I would say, if you can describe, okay, like when you started your career and then you moved to Teradata, from Teradata you moved to IBM. So Mhm. what difference did you see there? क्या आपको फर्क नजर आया इन कंपनीज के एनवायरनमेंट में, उनके कल्चर में, Mhm. भी जिन चीज़ों ने दे हेल्प यू कि आप, क्योंकि स्टार्ट तो आपने कहा कि आपके जहन में तभी आ गया था व्हेन यू स्टार्टेड योर फर्स्ट जॉब, जी जी. हैव टू बी, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको हेल्प आउट किया कि आप फिर टेक्रो तक पहुंचे? हम्म. जी बिल्कुल. देखिए, मैंने एक स्टार्ट किया था एक कंपनी में, जो कि अपना करियर स्टार्ट किया था एक कंपनी से जो कि अराउंड 50 लोग थे. इट वाज अ रीजनेबल साइज एट दैट टाइम. और एक कंपनी थी जो कि लोकल लोकल सेटअप था, लोकल मैनेजमेंट थी, बट दे वर वर्किंग ऑफशोर. तो और देन फिर वहां से जब मैं एलएम केआर आया, एलएम केआर वाज अ बिगर कंपनी. तो डेफिनेटली जब आप एक छोटे सेटअप से बड़े सेटअप में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ और प्रोसेसेस डिफाइन होते हैं, और एक वे ऑफ वर्किंग डिफरेंट होता है, और आपको एक डिफरेंट एक्सपोजर मिलता है. तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. तो और फॉर्चुनेटली आई गॉट सम रियली ग्रेट मेंटर एट एलएम केआर. और हम्म। और लाइक जो एलएम केआर के, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, लेट मैम शबाना खान, और उनके हस्बैंड मिस्टर आतिफ रईस खान, और एक हमारे वीपी ईवीपी थे सर तैयब मलिक. सो ऑल दीज पीपल वर सो ग्रेट. एंड उन्होंने मेरी मेरे प्रोफेशनल कैरियर में उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. तो लाइक आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, कैंडिडेटली लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम. देन ऑफ कोर्स मैंने डिसीजन लिया एलएमकेआर को छोड़ के उस पे टेराटा में जाने का. टेराटा वाज अ एमएनसी, इज अ एमएनसी. और उसका उस सारी बात है वहां पे. फिर जब मैं गया कि लाइक फ्यू हंड्रेड पीपल कंपनी टू फ्यू थाउजेंड पीपल कंपनी, तो दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज एज वेल. और वहां पे बहुत एक्सपोजर मिला. इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड. एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर वहां पे बहुत ज्यादा मिला. And then I joined IBM. IBM again, from 1,000 people, some few thousand people to some 300,000 people company. So अब वहाँ पे कुछ वे ऑफ वर्किंग टोटली डिफरेंट था. वहाँ पे भी बहुत एक्सपोजर मिला. तो इट्स अ ग्रेजुअल, आई मस्ट से, कि जहाँ जहाँ भी मैं गया, तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा एक डिफरेंट एक्सपोजर मिला. और दैट एक्सपोजर हेल्प मी टू टू बिल्ड अप टेक्रो. So basically वहाँ का एक्सपीरियंस, ऑल माय एक्सपीरियंस ओवर 2 decades. और जो मैंने प्रोसेसेस सीखे, वे ऑफ वर्किंग सीखा, business norms सीखे. तो so all these helped me out to set up this company. Okay, so this is really, really a helpful thing that you got exposure with so many
uh, I would say experts of that field. और सबसे important चीज़ जो Absolutely. मैं समझती हूँ कि जब when you are starting your own, I think so. Uh, you have technical skills, but you need to Mhm. learn business skills. If you don't have business skills, you cannot run your own company, and you must have gathered all those skills till that time when you started your own company, that was Tekrowe. So okay, could you describe what you people are doing in Tekrowe, जो आपने पहले भी थोड़ा सा बताया, but I want कि आप थोड़ा सा मजीद Mhm. इसको explain कर दें. When you have made this company, how it is different, what is the USP that you people are providing? हम्म। बिल्कुल टेक्रो अगर मैं एक ब्रीफ आपको बताऊं टेक्रो इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज कंपनी so the services are our core business and we are providing that development services to mainly to different startups और जो कि अपना अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हैं लेकिन उनके पास कोई टेक्नोलॉजी स्किल्स नहीं होती या टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं होता या टेक्नोलॉजी विजन्स नहीं होते so basically, what we do, we write technology for their businesses. So they will take care on the business sides of thing, and we take care of the technology side of thing. So Uh, for a this is our core. for a Gee. layman, So this is someone who doesn't know, like if I say if I'm starting a company, so what are the services that you can provide to me? yeah. So if you have idea that जो भी आपका स्टार्टअप आइडिया है उसके अंदर कहीं ना कहीं अगर टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है ठीक है तो we can develop the technology for you so this is the basic model so For example, so जी लोगों को है like I want to send them a message, or Mhm. I want वो जो क्लाइंट है एंड द जो सेलर है वो दोनों एक पॉइंट पर आ जाएं, सो वी नीड सम अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट, इट्स जस्ट लाइक एन ऐप. So you do those things, you provide them that technical aspect. yes basically we develop that app for them तो जो Okay. भी वो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन होगा वो बेसिकली हम बनाएंगे जिसके ऊपर वो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं so Okay. this is what we do and this is one part that we do and we are open for the other technology services as well like some key services like in data science data analytics और उसके अलावा we are working on the web enterprise application development mobile application development so these are our core expertise and अगर हम business domain या industry verticals की बात करें तो we are working healthcare mainly and other than healthcare, we are also working on construction, supply chain, corporate compliance, and some other very interesting retail. So these are our key industry verticals that we are working with. So these are quite varied, I would say, that you are working in different Mhm. sectors with. Okay, Absolutely. you talked about your mentors. आपने बात की अपने mentors की. Mhm. Mhm. There are so many people who impress us in many ways. But if you talk about your mentors, क्या ऐसी special चीज थी that you were really inspired by them? Either it's a Mhm. soft skill or any other thing. Mhm. Uh, जी जैसे मैंने पहले कहा कि I have been very fortunate that wherever I have gone तो वहाँ पे मुझे अच्छे mentors मिले तो बिल्कुल टेक्निकल मेंटोर्स भी मिले कुछ ऐसे लोग थे जो कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया वो बेसिकली लीडरशिप so I found very amazing leaders of course technology and business leaders in my whole career और लाइक LMKR के मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किए एंड व्हेन आई वेंट टू टेराडाटा तो वहाँ पे बेसिकली जो बिजनेस डिलीवरी लीडर्स थे तो नंबर ऑफ इन पाकिस्तान में भी पाकिस्तान से बाहर भी जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला so they were amazing people so so this is what I got from my mentors that how to be a good leader and of course some business sense and or how to be a good professional so these are the some things that some key takeaways that I got from my Excellent. mentors. So you must have been practicing those same skills, that same leadership skill that you must have learned from your mentors. And Absolutely. this is the ultimate Absolutely. take. When you are impressed by someone, what things or what skills you have picked from them. So, talking about your company, Tekrowe, and then talking about the situations that are prevailing right now in Pakistan, Mhm. how do you see future of startups here?
इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए पिछले पिछले कुछ अरसे में स्पेशली मैं कोविड के दिनों की बेसिकली बात करूंगा, जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैव बहुत ज्यादा बेसिकली चीज स्टार्ट हुई, विच इज वेरी गुड थिंग। और बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स थे जिन्होंने बेसिकली बहुत ग्रो किया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान के अंदर। और उससे भी ज्यादा मतलब जो अच्छी बात थी कि दी स्टार्टअप्स क्रिएटेड नंबर ऑफ जॉब्स, नंबर ऑफ रोल्स इन पाकिस्तान। और वहाँ पे लोगों को एक कुछ वर्ल्ड क्लास एप्लीकेशंस के अंदर, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करने का मौका मिला। और देन फिर बहुत सारे स्टार्टअप्स थे जो कि कनेक्टेड थे विद सम इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स इन द अदर कंट्रीज। तो जो जो यहाँ का लोकल टैलेंट था उसको मौका मिला अपने उन लोगों से इंटरेक्ट करने का, वन वे और द अदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो एक प्रोफेशनलिज्म जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हमारी एक नई जनरेशन में आया, और स्किल्स सीखने को मिली। और डेफिनेटली एक एक अच्छी जो एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें बेसिकली एक्सेल करने का मौका मिला। तो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की मैं बात करूं तो इट इज अ रियली गुड इनिशिएटिव्स। लेकिन कुछ चीजें जो है जो कि हमें लर्न करनी चाहिए कि स्टार्टअप्स करने से पहले यू हैव टू बी अ सॉलिड बिजनेस प्लान। यू नीड टू हैव अ गुड रोड मैप, एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक रनवे, एक रोड मैप डेफिनेटली होना चाहिए जिसमें आप देख सकें कि मतलब 6 मंथ्स इज नॉट अ बिग पीरियड। तो मतलब जिस 6 मंथ्स आर इज अ टाइम दैट यू कैन इजीली प्लान। तो दिस इज माय एडवाइस टू द स्टार्टअप्स, तो कि वो एटलीस्ट इतना रनवे रखें कि वो अगले चंक्स के अंदर 6 6 महीने करके कुछ प्लान करके चल सकें। तो बिकॉज ऑफ कोर्स वर्ल्ड डायनामिक्स आर चेंजिंग, पाकिस्तान डायनामिक्स आर चेंजिंग, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर तरह की सिचुएशन से पाकिस्तान को इस टाइम पे गुजरना पड़ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि IT industry or IT startups are the things that who are creating jobs. They are contributing in Pakistan as well as in the overall society. They are creating jobs. They are providing opportunities, learning opportunities, excelling opportunities to the coming generation. So this is my point of view about the startups. Yeah. So it means you are really hopeful about the startups and especially about the IT industry, Yeah. because इस वक्त if we see the world even हर जगह हमें जो नज़र आ रहा है कि digital services they are expanding, और जैसे AI अभी आ गया है तो उसके बाद तो मज़ीद I wanted to take your opinion on this one as well, about artificial intelligence as well. कहाँ आपको लगता है where is Pakistan and where is the world? How much is the difference between them? देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर आप इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो शायद अभी वो इम्प्लीमेंटेशंस AI की पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बिकॉज इंडस्ट्री का कुछ फुकदान है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इतनी ज्यादा नहीं हो रही, बल्कि इनफैक्ट कुछ लास्ट एक वन डिकेड में कुछ कम ही हुई है। तो और, उस तरह से बिजनेसेस उस तरह से फ्लोरिश नहीं किए। लेकिन गुड थिंग अबाउट AI इन पाकिस्तान दैट कि यहाँ पे एटलीस्ट companies are working on AI development, not for Pakistan, but for their clients. तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस है। और Yeah, जो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस है दैट इज गुड। और तो मैं ये समझता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम इसको हमारे मुल्क के अंदर कोई इंडस्ट्री भी फ्लोरिश करती है और बिजनेसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली एक AI का जो वो है एक इम्पैक्ट है वो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी आएगा। बाकी ऑफ कोर्स कुछ फियर्स हैं, बट बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं, दे आर दे आर fearing about it कि AI will cut the jobs। वो बातें सब अपनी जगह, लेकिन स्टिल मैं ये समझता हूँ कि टू सम एक्सटेंट इट्स अ नीड। और कुछ चीजें लाइक जो परफेक्शन के लिए आपको AI की जरूरत है। मतलब मैं पाकिस्तान के अंदर इसकी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना भी जरूरी है। तो exactly. उसके साथ अगर AI चले तो वो एग्जैक्टली, बट आई थिंक सो पाकिस्तान में इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा आपको यूजेज नज़र आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रादर जी। देन इंडस्ट्रीज और कंपनीज और लाइक दैट, बट इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स, बिकॉज व्हेन द वर्ल्ड इज जस्ट गोइंग ऑन दैट थिंग, आप उससे पीछे तो रह नहीं सकते, इट्स जी। बीन जी। ग्लोबल, so जी। we have to. So if I question I wanted to ask you about, if there are young people who are interested into
entrepreneurship and startups. So what would you advise them? Like you advised earlier in an answer that के 6 महीने अपना लगाएं उसके ऊपर अब solid business plan हो. Solid business plan आ गया उसके बाद what should they do? हम्म। देखिए, हमने जब टेक्रो स्टार्ट की, मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। लाइक मेरा टेक्रो स्टार्ट करने से पहले ओवर 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस था। माय अदर को फाउंडर्स, उनका भी एक का 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस था, एक का 1 decade ऑफ एक्सपीरियंस था। तो हम वी हैड अ वेरी सॉलिड एक्सपीरियंस विद अस, जिसके अंदर टेक्निकल भी था, प्रोफेशनल भी था, और डिफरेंट तरह के हमने प्रोजेक्ट्स पे और वेंचर्स पे काम किया था। हमारा एक नेटवर्क था। तो उसकी बेसिस पे we considered all these things as our assets, or the ingredients to start this company. और उसी की बेसिस पे मैं समझता हूँ कि we are at a certain level. यंगस्टर्स डेफिनेटली मैं थोड़ा से एक एक जो होता है एक्सपोजर की कमी जरूर होती है, लेकिन आई बिलीव कि उनका विजन, उनकी डायरेक्शन ठीक होती है। ठीक है। तो अगर अगर कुछ लोग, मैं ये नॉर्मली लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो थोड़ा सा अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, तो दैट दैट मेक्स अ मोर डिफरेंस देन अगर एक कॉलेज ग्रेजुएट जो है वो चीज को स्टार्ट करता है। मे बी कुछ चीजों में पास केसेस में आई एम रॉन्ग, लेकिन दिस इज माय परसेप्शन। मतलब मैंने जिनसे मेंटोरशिप दी, मतलब मैंने यही देखा कि एवरीवन हैड सम इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, एंड देन दे केम इनटू द आफ्टर सर्टेन टाइम दे केम इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो एक उसके उसके मैं समझता हूँ प्रोज ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बिल्कुल अगर आप यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से निकल के अगर कुछ चीज स्टार्ट करते हैं। तो बट वही ऑफ कोर्स एक मोटिवेशन डेफिनेटली एक यंगस्टर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एन एक्सपीरियंस पर्सन। energy level, I think so that is एब्सोल्युटली। या। more important thing. लेकिन when you are working somewhere, when you get experience, you get to know people, you network, and I think so that is the important thing. आपका क्या ख्याल है? Like networking इस वक्त, if you are not connected to the people, you cannot work as a solitary person. तो जब तक आप connected नहीं है, you can't do that. As long as you are working somewhere, you are gaining experience और साथ में आप network भी कर रहे हैं. Just like CxO Global. मैं जी। जानना what are your views about CxO Global? How is it bringing people together? How is it helping the overall economy? जी बिल्कुल, मुझे इस साल के स्टार्ट में बेसिकली CxO ग्लोबल के बारे में पता चला, और डेफिनेटली थ्रू लिंक्डइन, और देन आई जॉइंड देयर CxO ग्लोबल ग्रुप। थोड़ा सा और मैंने स्टडी किया, इनके कुछ इवेंट्स थे उनको देखा, स्पेशली व्हेन गॉट टू नो दैट व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर पार्ट ऑफ इट। तो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और यकीन करें, जब मैंने इसकी मेंबरशिप डिटेल्स देखी, तो नेक्स्ट डे आई टॉक टू शुएब, माय द अदर को-फाउंडर ऑफ टेक्रो, एंड आई मेंशनड दैट यार हमें हमें बेसिकली ये ज्वाइन करना चाहिए। इट्स अ it's a good collaborative place, and I believe we can contribute here, and in a positive manner we can learn from the different people, and of course 3 ऑब्जेक्टिव्स है बेसिकली CxO ग्लोबल को ज्वाइन करने के। नंबर 1 टू कोलैबोरेट, नंबर 2 टू कंट्रीब्यूट, टू शेयर ओवर एक्सपीरियंस, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से किसी को फायदा हो, एंड ऑफ कोर्स एक बिजनेस एस्पेक्ट, एक कमर्शियल एस्पेक्ट होता है कि यू ऑलवेज सी द अपॉर्चुनिटीज। तो ये बेसिकली 3 होते हैं, और तीनों को बेसिकली अगर ट्रायंगल आप करें तो तीनों आपस में these 3 ऑब्जेक्टिव्स आर वेल कनेक्टेड। ठीक है। आप Exactly. कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आप कोलैबोरेशन में भी कर सकते हैं, आपको कुछ और एज अ कंपनी भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, और ऑफ कोर्स जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो और उससे भी किसी को फायदा होगा, किसी की बिजनेस को फायदा होगा, किसी को के प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स मीट होंगे। तो दिस इज द Absolutely मॉडल। right. Asim, I always want to learn more from people, and today I have learned so many good things from you. And but एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछना है, जी like जी। 2 or 3 words में अपना vision बता दें, like what is the your vision for success? So that is going to be with me for my whole life, because
when we talk to people, why do we talk to them? We always want to learn. तो आज की जितनी चीज़ें हैं वो तो मैंने सीखी ही हैं, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसी टिप, कोई ऐसी एडवाइस दैट यू वांट टू गिव फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, तो प्लीज डू शेयर विद अस. हम्म। देखिए, मेरा विजन बेसिकली, अगर आप एक लाइफ का विजन से मैं पूछती हैं तो इट्स अ लेगेसी, legacy that I will leave, not for my biological children, but overall in the society, in my for my colleagues, for my juniors, and the people who knows me. So what I am leaving behind for them, चाहे वो मेरा knowledge है किसी से अगर मैं share कर रहा हूँ, चाहे वो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज थे या बिजनेस को मैंने ग्रो किया तो उसकी वजह से अगर किसी को फायदा हो रहा है, तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन लीव बिहाइंड. तो मेरा बेसिकली विजन यही है कि मैं कुछ ऐसे ऐसी चीजें करूँ, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हों मेरे, जिसको लाइक मेरे बाद बहुत से लोगों को उसका फायदा हो. So तो basically दिस इज माय that विजन. help people after us. So whatever we are एब्सोल्युटली. doing जी. for our country, I think so this is going to have long term effects, and I'm really thankful ट्रू. to you. It was really exciting session. I learned a lot from you, and inshallah we'll be in touch for collaborations, mazid ko discussions हो, कोई ऐसे events हो. So we would like to know, because somebody who is at this level right now has learned so many things from life, and वो जो चीज़ें हैं, they are learning lesson for the youngsters or the other ones who are, even if they are in different fields. So thank you so much for coming in थैंक यू our सो मच. on our platform and sharing your knowledge. Thank you so much. Thank you so much, Arda. Thank you. Thank you. Take care. Allah Hafiz.